Hello everyone, it's me Sonali Batra from ENNIL's Home Coaching, and I'm back with my another video. And my today's video is on the list of headings. What is the list of headings? List of headings is one of the basic as well as the most common type of the question which comes in the IELTS reading. And in my IELTS experience being a trainer, I have observed that most of the students face the problem to solve list of headings. First of all, what is the list of heading as a question? List of heading means to give the heading to your paragraph. Paragraphs which are followed by your passage heading, you have to give a particular heading to that paragraph. Next, how to give the heading then? Whatever your heading is, whatever the topic of your heading is, that topic will be explained in that short paragraph. For example, if your heading is saying reasons, then the reasons will be explained in that. If the heading will be given in the form of comparison, then that comparison will be explained in that paragraph. So you don't have to focus on the words of the paragraph. Don't match the words in the IELTS reading. Don't do this kind of mistake. Mostly I have observed that when it is suggested to the students to use the skimming and scanning, they only take it to use in such a way that they only match the same word with the whatever the question is. It is not about the matching of the words, it's about matching the meaning. What the meaning is, what the explanation is. Students have to understand this thing, that it is not about matching the words in the reading, it is about to match the meaning, to match the explanation, and to understand that first. So same in the case of the list of headings. If you have to solve it, you have to first of all observe that what the topic of your heading is. You have to see what the heading is asking or what the heading is saying, and then you have to match it accordingly in your paragraph. Do not do hurry in this. Do not just match the words. Do not match the exact lines of the paragraphs given in the options of the list of headings. Don't do such kind of mistakes, otherwise you will face the problem in the list of headings. Then further, let me tell you this thing, that list of heading is also a type of the question which will carry only 1 mark per one question. So when you have to solve the list of heading question, you can do another type of the question at the same time. So I will solve one particular list of heading type of questions in front of you and will explain you how to solve it in detail. So let's see that. So if you see, these are the list of heading type of the questions, and when we have to start them, we have to read the instructions. And what are the instructions? That reading passage 3 has 8 sections, A to H. There are total A to H sections, means A to H paragraphs. What it is saying, choose the correct heading. We have to give the heading to each section from these list of headings. Okay, so when we have to start them, we have to make one guess. What that guess could be? There are total 8 questions, and total there are 9 list of headings. So there is one clue that out of all these list of headings, only there will be the one list of heading which is extra than our questions. But still we don't have to get confused with it. So when you have to start your list of heading type of the questions, yes, you should take a clue that what your headings are. How to take that clue? The very first is complaints. What it is saying, complaints about the impact of certain approach. There will be complaints about any specific or any certain approach. Where these complaints will be explained, we will give this heading to that paragraph. In the same way, fundamental beliefs that are in fact incorrect. We have to see
those fundamental beliefs that are incorrect. Same early recommendations in one paragraph, early recommendations will be given concerning means regarding business activities. Next is organizations. We will give this heading to only that paragraph where the name of the organizations or the different kind of organizations will be explained that put a new approach into practice. Next is companies that have suffered from changing their approach. Again in the paragraph, companies will be explained that have suffered from the changing their approach, कि अपनी approach change करने से जो suffer. In the same way we will observe them. What people are increasingly expected to do, means what are the expectations from the people. How to achieve outcomes that are currently impossible. वो वाली outcomes कैसे achieve की जा सकती हैं जो currently impossible हैं. There will be the steps, ways. We can write, we can make the short notes, we can make a master copy for us when we have to do the reading. Neither approach guarantees continuous improvement. कोई भी approach continuous improvement guarantee नहीं करती है. So there will be the approach explained in that. Evidence, there will be the evidence in one paragraph that a certain approach can have more disadvantages than disadvantages. That evidence, that proof will be just justifying this thing that disadvantages of certain approach are more than advantages. This is the way that we will have a clue from our the list of headings, that what actually the headings they have already given to us and how we have to judge the heading. I have explained that. Further, let us read the paragraph how we have to do it. If you can see this thing, they have given us the heading to the passage that why companies should welcome disorder, कि companies को disorder welcome क्यों करना चाहिए. So let us start. Organization is big business. Organization एक big business है. Whether it is of our lives, चाहे हमारी life की ही बात क्यों ना हो. All those in boxes and calendars or how companies are structured. सारे in boxes, calendars या कैसे जो companies जो हैं वो structure की जाती हैं. multi-billion dollar industry help us to meet this need. वो हमें help करती हैं इन needs को पूरा करने में. They have just given them meaning to the organization. Clear? What is next? We have more strategies for time management, project management and self-organization. हमारे पास बहुत सारी strategies हैं time management, project management या self-organization से लेके. अभी यहाँ पे हमने organization का meaning देखा था, but यहाँ पे there was no any list of heading which was giving us the meaning, that they have asked the meaning of the organization. So we will not come to this and mark it. Next strategies हैं what we have, ऐसा भी कुछ list of heading नहीं था. That any other time in the human history, मतलब in comparison to any other time history, now we have more strategies of the time management, project management and self-organization. We are told that we ought to organize our company. हमें बोला जाता है कि हमें इट्स अ काइंड ऑफ अ मॉरल वैल्यू कि हमें अपनी कंपनी को ऑर्गेनाइज करना है, हमारी वर्क होम लाइफ को करना है, वीक डे इवन अवर स्लीप. अब यहाँ पे बात आ रही है कि हम लोगों को बोला जाता है कि हमें ये सब चीज़ें करनी है. ऑल एज अ मीन्स टू बिकमिंग मोर प्रोडक्टिव, ताकि हम और ज़्यादा प्रोडक्टिव हो. एवरी वीक काउंटलेस सेमिनार्स एंड वर्कशॉप्स टेक प्लेस. हर वीक काउंटलेस बहुत सारे सेमिनार्स या वर्कशॉप्स होते हैं अराउंड द वर्ल्ड टू टेल अ पेइंग पब्लिक दैट दे ought टू स्ट्रक्चर देयर लाइव्स. ought टू अगेन किस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है, फॉर द मॉरल वैल्यूज़, कि हमें ये चीज़ करनी है, अपनी लाइफ्स को स्ट्रक्चर करना है इन ऑर्डर टू अचीव दिस. तो हमें ये चीज़ बोली जा रही है कि हाउ वी हैव टू लिव द लाइफ. नेक्स्ट, दिस रिटोरिक हैज़ ऑल्सो क्रेप्ट इन टू द थिंकिंग ऑफ बिजनेस लीडर्स. और यही जो थिंकिंग है वो बिजनेस लीडर्स और एंटरप्रेन्योर्स के दिमाग में थिंकिंग में आई है. मच टू द डिलाइट ऑफ सेल्फ प्रोक्लेम परफेक्शनिस्ट, मतलब जो सेल्फ
प्रोक्लेम परफेक्शनिस्ट होते हैं उनके लिए भी ये डिलाइट वाली फीलिंग है, विद द नीड टू गेट एवरीथिंग राइट, कि हर एक चीज़ जो है वो सही जाए. The number of business schools and graduates has massively increased. Business schools और graduates बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं over the past 50 years, essentially teaching people how to organize well. कि लोगों को सिखाया जाता है कैसे हमें organize करना है अच्छे तरीके से. So what we have read is कि ऑर्गेनाइजेशंस कैसे हैं, वहाँ पे हमारी कोई ऐसी लिस्ट ऑफ हेडिंग नहीं थी, क्योंकि हमने कंप्लेंट्स, फंडामेंटल बिलीव्स, जो अब अगर आप बिलीव्स को लेते हो बट वो इनकरेक्ट है, ऐसा कुछ भी नहीं बोला हुआ. कुछ अर्ली रिकमेंडेशंस नहीं है, कोई कंपनीज़ के बारे में नहीं बताया गया. क्या हमसे एक्सपेक्ट किया जाता है, व्हाट पीपल आर इंक्रीजिंगली एक्सपेक्टेड टू डू. हो सकता है क्योंकि और कोई हमें दिया नहीं हुआ कि करंटली आउटकम्स जो करंट आउटकम्स है वो करंटली इम्पॉसिबल है, कोई भी अप्रोच या एविडेंस, नो, देयर इज़ नथिंग गिवन टू अस. यहाँ पे हमें ये चीज़ बोली हुई कि व्हाट वी हैव टू डू, कि हमें अपनी लाइफ को बैलेंस करना है. हमें इसी चीज़ को सिखाने के लिए सेमिनार्स लगते हैं. वी ओट टू अगेन दे आर यूजिंग दिस थिंग, दे ओट टू उन्हें ऐसा करना है, उन्हें ऐसा करना है. तो वी आर टॉकिंग अबाउट द एक्सपेक्टेशंस, यस और नो. अब यहाँ से हमने क्लू लिया हुआ था, सो वी कैन क्विकली कम ओवर हियर एंड वी विल गिव द आंसर इन दिस वे. बी केयरफुल विद दिस, यू विल नॉट मार्क योर आंसर in this way, you will not means put the brackets, that will be wrong. You will not write the answer in this way, this is also the wrong way of writing your answer. Be careful with this thing. Clear with this? Okay, so if we continue with the next, now we got to know about this thing that they have talked regarding our expectations, regarding what they expect. Further, the next paragraph will be linked to the first paragraph. What they have said, ironically, however, लेकिन number of businesses, बहुत सारे जो businesses हैं, that fail has also steadily increased. जो fail हो गए थे वो भी अब क्या हो गए हैं, increase हो गए हैं. Work related stress has also increased. Work related stress भी बढ़ गया है. A large proportion of workers from all demographics, whatever the features are, उनसे जो large proportion of workers belong करते हैं, claim to be dissatisfied. अब वो satisfied नहीं हैं, they are not satisfied. अब आप जिससे satisfy नहीं होते हो, means you do the complaint for it. So विद द वे देयर वर्क इज स्ट्रक्चर, वो डिससेटिस्फाइड हैं जिस तरीके से उनका काम स्ट्रक्चर किया गया है, एंड वे दे आर मैनेज, जिस तरीके से उन्हें मैनेज किया जाता है. डिससेटिस्फेक्शन को यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है. फर्दर दिस बैग्स अ क्वेश्चन. अब यहाँ से क्या हो जाता है, क्वेश्चन अराइज हो जाता है. व्हाट हैज़ गॉन रॉन्ग, क्या गलत गया ऐसा. Why is it that on a paper the drive for the organization seems a sure shot for increasing productivity? कि क्या क्यों है ऐसा कि पेपर जो है वो डिराइव कर रहे हैं कि ऑर्गेनाइजेशन कि वो श्योर शॉट हो जाए अपनी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए, बट इन रियलिटी फॉल्स वेल शॉर्ट ऑफ व्हाट एक्सपेक्टेड. लेकिन रियलिटी क्या है कि वो शॉर्ट फॉल कर जाता है जो एक्सपेक्ट किया जाता है. अब यहाँ पे उसी को लेके क्वेश्चंस अराइज हुए हैं, ठीक है जी. अब यहाँ पे कोई डाउट, कोई क्वेश्चन से रिलेटेड लिस्ट ऑफ हेडिंग थी? नो, वी डोंट हैव एनी लिस्ट ऑफ हेडिंग. यहाँ पे हमें कंप्लेंट्स क्यों करेंगे हम लोग, क्योंकि उन्होंने डिससेटिस्फेक्शन को डिस्क्राइब किया गया है. अब ये चीज़ कंप्लेंट्स जो हैं वो सर्टेन अप्रोच, और वो सर्टेन अप्रोच किस चीज़ को लेके थी कि वो जो लार्ज प्रोपोर्शन जो डेमोग्राफिक्स है उनको लेके. अब वो चीज़ यहाँ पे एक टर्म एक्सप्लेन्ड है. इन दिस वे योर वन लिस्ट ऑफ हेडिंग विल बी एक्सप्लेन्ड इन द पैराग्राफ. जो आप यहाँ से एक्सप्रेशंस को ऑब्जर्व करोगे, रीड करोगे, वो एक्सप्रेशंस विल बी योर लिस्ट ऑफ हेडिंग. So what will be the answer of it? That is the first. बाकी के क्यों नहीं आए,
क्योंकि यहाँ पे अगेन कोई फंडामेंटल बिलीव्स नहीं बताए गए थे। बिलीव्स क्या होती हैं, किसी के व्यू पॉइंट्स, उनको इनकरेक्ट नहीं बताया गया था। कोई अर्ली रिकमेंडेशंस, नो देयर वर नो एनी अर्ली रिकमेंडेशंस। कोई ऑर्गेनाइजेशंस की बात थी, कोई कंपनीज की बात थी, नो। हाउ टू अचीव आउटकम्स, कोई वेज बताए हुए थे, नो। नाइदर अप्रोच गारंटीज कॉन्टिन्यूस इम्प्रूवमेंट, इन्होंने कोई अप्रोच की बात नहीं करी थी कि वो कॉन्टिन्यूस इम्प्रूवमेंट गारंटी नहीं करते, कोई एविडेंस भी नहीं दिया था। So this is the way how we can solve the list of headings. Means we have to make a clue that these are the main topics of our list of headings, and these particular headings, these particular topics to your headings will be explained in your paragraph. So you need to be careful with that. So thank you for watching it, and I will leave one question at the last of the video. So you have to give the answer to that question, and I'll see that whether you got to know about my list, about my tips or not. Thank you.